Hi, this is Salman. So I hope you guys watched my previous video. So the first video is about the introductory video and the second video is about the Futura SDK. So now it's time to jump into the actual code. So मैंने GitHub पे सब code public कर दिए हुए हैं. So if you guys face any problem, you can comment on it. So I'll be there. You can report an issue as well. सो मैं इसका लिंक अब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा. सो दिस इज़ हाउ यू विल नो how ZATCA is working. Let me give you a brief overview, but before that let me tell you how the responses comes to me. So this is, I added a debug mode, and when I this is the voice going to the ZATCA and response is coming back from them. So if you see the result is pass, invoice is reported, that what we seen in the previous video in the compliance invoice API. So if you compare the response as well with that, so you can see the status should be passed and reported, and this is coming, all these things, and I did it, and I finally get to manage it, and now you can see the response is coming over here. सो डिस्कस करते हैं इसका कुछ कोड बेस ये कोड बेस कैसे काम कर रहा है. सो मैनुअली these are the debug function for me to add a debugs and some other stuff. You can guys can update this code as well as per your requirements. So this is the actual invoice line. जब भी कोई invoice होती है उसमें कुछ invoice items होती हैं, like you buy 2 coffees. So the coffee will be the one line. So this is the ID. You can take anything, the name of the item, the quantity, how much you take. As I tell you, you took 2 coffees. The tax inclusive price is 10. VAT implemented on it 0.5%, because this is the Saudi standard. You have implemented 0.5, 15 or 0.5. Other taxes, there are no other taxes, so I keep it blank. So you can add also a discount as well to it. So the second thing is the UUID. This is the main invoice. You can say the configuration, you can say your VAT name, VAT number, look your business location, your branch name, and your invoice type and your invoice number, all these stuff. This is the date and time that you are giving, and this is the previous hash of your invoice. So right now I'm giving a dummy hash. So actually at first time you can also give a dummy hash or empty string, and second time you have to pass the previous hash of the invoice. So you have to store it on the database. So first let's go to the EGS. It's the file that I created to deal with the private key and the CSR. सो अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है उसमें देखा होगा आपने हम फतूरा SDK के थ्रू सर्टिफिकेट एंड CSR जनरेट करते थे, जिससे फिर हम नेक्स्ट कोई भी इन्वॉइस को साइन करते थे, वैलिडेट करते थे, साइंड इन्वॉइस में कन्वर्ट करते थे एंड और उसको सबमिट करते थे और उसकी JSON रिक्वेस्ट को जनरेट करते थे. सो इन ऑल दी स्टफ, बट इन द कोड आपको ये मैनुअली हैंडल करना है. जो फतूरा की SDK बिहाइंड द सीन, फतूरा की जावा SDK बिहाइंड द सीन खुद ही हैंडल कर रहा है. सो हमें ये मैनुअली हैंडल करना है. सो दिस इज़ ऑल कोड रिटन इन here in this file, where you can see I'm generating a CSR in the temp folder, and later on I'm deleting it, which is I'm creating the PEM, the CNF, for the CSR. So this is to generate the CSR only, and this is the default CSR configuration. अगर आपको लास्ट वीडियो याद हो उसमें आपको पता होगा कि हमने CSR कॉमन प्रॉपर्टीज़ की जो हमारी फ़ाइल थी उसमें हमने अपना वैट नंबर दिया था, ब्रांच लोकेशन दी थी, ये प्रोडक्शन है कि नहीं है, ऑल दी स्टफ, टैक्स पेयर नेम, ब्रांच नेम, एंड ये सब इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं यहाँ पे ECD यूनिट्स में. ओके, and this is the function to generate the UUID, and this is the first API, the issue compliance certificate. So जो हमने यहाँ पे ZATCA में देखा, the first API, compliance CSID API. So this is the compliance CSID API, you can say. This is the second function, sign invoice, the check invoice compliance.
So you can say this is the first API that will call, this is the second API that will call, and this is the, you can say, a in between function before before calling a second API. So जब भी कोई इन्वॉइस जनरेट हुआ करेगी, सो दिस इज़ नॉट ओनली स्टफ कि बस आपको इन्वॉइस जनरेट करनी है, आपको इस इन्वॉइस को साइन करना है अपनी प्राइवेट की से, तो सो दिस इज़ द फंक्शन टू साइन योर प्राइवेट की एक्चुअली. ओके, सो ये था ETS का कोड हमारे पास, and here I set the production to be false. So यहाँ पे हमने न्यू CSR ID और प्राइवेट की को जनरेट किया, प्राइवेट की एंड CSR एंड कंप्लाइंस सर्टिफिकेट. यू नो, जब हमने जो भी कंप्लाइंस की जो API है, कंप्लाइंस API को कॉल करने के लिए, कंप्लाइंस CSID API को कॉल करने के लिए हमारे पास ज़रूरी था कि हम OTP पास करें और CSR पास करें. OTP प्रोडक्शन पे जो आपका OTP होगा वो, बट सैंडबॉक्स पे हम कैन बी गिव एनी 6 डिजिट्स. उसके बाद हमें कंप्लाइंस की API जनरेट करने के बाद हमें ज़रूरत है कि हमारे पास रिटर्न होगा बाइनरी सिक्योरिटी टोकन एंड सीक्रेट. इन लास्ट वीडियो एज आई टोल्ड यू कि CSR ID आपको दो चीज़ें रिटर्न करेगी, बाइनरी सर्च टोकन, दिस इज़ योर यूज़र नेम, एंड सीक्रेट, दिस इज़ योर पासवर्ड. उसके बाद हमें करनी है कंप्लाइंस इनवॉइस API कॉल टू मेक श्योर आवर इनवॉइस इज़ signed completely good and good enough. So this is how I'm signing invoice, and you can explore this code later on. And last we are making a call of check invoice compliance. हम check invoice compliance की फंक्शन को कॉल करेंगे जो हमारी API, जो हमारी इनवॉइस को JSON के अंदर कन्वर्ट करेगा, प्लस फिर उसको फतूरा पे सबमिट करेगा. वहाँ से रिजल्ट्स आएंगे कि येस योर इनवॉइस इज पास और नॉट, विच इज़ राइट नॉट डिस्प्ले ओवर हेयर. ओके, सो आफ्टर दिस ये इनवॉइस जनरेट होने के बाद हम कोई QR कोड जनरेट करेंगे. उस QR कोड पे जो हमारा इनवॉइस के थ्रू जो हैश निकलेगा, जो कि जस्टिफाइबल होगा उस साइट पे, लाइक आप इस हैश को आप ZATCA की इटसेल्फ ऐप के में लॉगिन करके भी वेरीफाई कर सकते हैं कि येस ये यहाँ पे हमारे पास ये जो हैश है ये करेक्ट है भी कि नहीं. सो ये इसका प्रोसेस है कि आप लॉगिन करें, आप वैट सर्विस में जाएं, आप इनवॉइस वैलिडेट करें, यहाँ पे आपके पास टोकन आएगा, यहाँ पे आप वो हैश एंटर करें और यहाँ से वो आपकी रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी जो बताएगी कि ये इनवॉइस करेक्ट है कि नहीं है. ओके, so let's guys move on. So this is the code which is printing out that showing your code is pass, and if I go to this code, so this is calling compliance API and then checking the compliance API function here, and that's all. This is the compliance invoice endpoint. This is the JSON we are sending to them, the base64 invoice data. सो अगर मैं आपको इसका कुछ और कोड एक्सप्लेन करूँ तो आप इसके ये टैम्पलेट्स देखेंगे. यहाँ पे ये CSR टैम्पलेट्स हैं. एक्चुअली ये CSR वही कॉन्फ़िग है जो हमने वहाँ देखी थी. यहाँ पे आप अपने कॉमन नेम, ऑर्गेनाइजेशन और बिज़नेस यूनिट सेट करेंगे. और अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है हमारे पास सिंप्लीफाइड टैक्स इनवॉइस. सो यहाँ पे एक सैम्पल टैम्पलेट बनाई हुई है जहाँ पे जो भी आपका डायनामिक डाटा होगा वो एक इन टैम्पलेट्स के साथ रिप्लेस हुआ करेगा. So at the time of compilation, so if you see जब भी आप इनवॉइस को कन्वर्ट करते हैं simplified text invoice, so it's converting your data with the actual values. Okay, so this is a generate QR code, and this is the tags to get the length and all other stuff, and this is the for the same thing, the same code. तो अगर आपको इनवॉइस सेंड करनी है तो उसके लिए आपका कोड होगा 388, डेबिट नोट के लिए 383 एंड क्रेडिट नोट के लिए 381. Okay, so let's go to the main file which is index.php. So as I told you, this code will not work on a Mac because due to different encryption functions that behave on Mac differently and then on Linux differently. So what I did, so I deployed my code on the Linux server. So you can see I'm getting this QR code.
सो जब भी आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे और ZATCA के इन्वॉइसेस, तो आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी और बेस 64 का हैश भी आ रहा होगा। वो हैश अभी के लिए वैलिड नहीं है। सो इन नेक्स्ट स्टेप what is my so far what my finding is to how we can complete this, so I'll share on that and we'll catch you there. Thanks, bye bye.